आज के चीफ गेस्ट हैं हमारे इस साइंस एग्जीबिशन के, और साथ में हमारी प्रिंसिपल मैम। This is inferior vena cava. This carries lower body part deoxygenated blood. This is superior vena cava. This carries upper body part deoxygenated blood. Blood comes into right atrium and left ventral through pulmonary artery, through lungs and oxygenated through pulmonary vein, atrium, through aorta, and all blood flow on oxygenated blood flow on all body parts. Respected principals and teachers. My name is Sonita. I'm class 10th B. Today we present my project geothermal power plant. Geothermal energy is heat within buildings में, households में और चीज़ों में कर सकते हैं। ध्यान रहे सभी पार्टिसिपेंट को। I want to show that this is my working model project on geostationary satellite. This is the equator, and the satellite is at the 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर के ऊपर फिक्स रहता है और ये इक्वेटर है और हमारा बहुत तगड़ा है और हम
Good morning, everybody. Principal ma'am and senior teacher. Myself Akshat Gupta from class 9B, and I make a mini metal cannon. And this cannon is use of Newton's third law. And I fill a gunpowder and mini metal ball on this side, and I burn this side the steel. देखिए पूरी तैयारी के साथ फायर होने ही वाला है। ये बहुत बेहतरीन इन्होंने select किया। और इतने मोटे देखिए प्लाई में इतना होल कर दिया है और इन्होंने अपने हाथों से बनाया है। लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है कि ये एक्सपेरिमेंट के लिए ही आपने बनाया था, यहीं तक रहे। Water and make a alarm which inform us that there is a rain. Chief guest and all teacher and my junior and senior. Myself Vacha is a atrium which carries oxygenated blood from heart to all parts of the body. And it is a veins which carry blood from. प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे आर्टरीज के थ्रू हम अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकालते हैं, उसके बाद उसको पंपर में भेजते हैं। वहाँ से पंपर इसको पंप करके हमारे डायलाइजर फिल्टर में भेजता है। डायलाइजर फिल्टर में एक डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसमें कि सॉल्ट, ग्लूकोज, वाटर एंड अदर एडिटिव्स प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से हमारा In this water cycle, liquid water is evaporating here in form of the gas, and then it condenses and form the cloud here, and then it precipitates back to the earth in the form of the rain. We know that the water cycle is very important because it goes to the lungs through pulmonary arteries. In lungs, and from lungs it goes to the right auricle. From right auricle it goes to the left ventricle, and from left chimney this is twin tower. Generally, this is worked on the principle of physics, which is nuclear fission. Nuclear fission is a process in which nucleus of an atom divided into two or more parts. In this reactor, we use uranium. In this process, uranium generated heat in this reactor. This heat passes through this electricity passes through the transmission line through the houses. And the other hand, stream loses their energy and passes